मॉर्निंग गाइस, आज हैं हम उत्तराखंड की वादियों में। फाइनली कितने दिनों बाद हमारा एक ट्रिप बना है। मैं और मेरा भाई जा रहे हैं नैनीताल। नैनीताल आई थिंक 30 किलोमीटर फार फ्रॉम माय होम। सो या अल्टीमेट ट्रिप होने वाला है। ये हमारे रास्ते का नज़ारा है। अभी आप हमारे साथ चल रहे हैं नैनीताल की ओर। आज हम जा रहे हैं नैनीताल। सो ये रूट है कालाडूंगी से नैनीताल जाने वाला है। एक्चुअली नैनीताल पहुंचने के दो रूट हैं। एक रूट बेसिकली अगर आप भुंटवानी से हो तो आप भुंटवानी से डायरेक्टली जा सकते हैं नैनीताल की साइड, और अगर आप आ रहे हो रामनगर के रास्ते तो आप कालाडूंगी होते हुए नैनीताल पहुँच सकते हो। तो हम हैं अभी ऑन द वे। आई डोंट नो व्हाट इज द प्लेस, बट क्या जैसे थोड़ा सा कुछ गाँव आते हैं हम आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचे। अभी हमने क्रॉस कर लिया है घटगढ़। तो ये घटगढ़ जो है फर्स्ट प्लेस है अपना कालाडूंगी से नैनीताल जाने के रूट में। सो हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट प्लेस आएगा मंगोली, तो हम आपको मिलते हैं मंगोली पे। ये आप नेचुरल व्यू है, इनको देखिए और एंजॉय कीजिए। नज़ारा है। अभी यहाँ से क्या होता है, ये पहले जो थे कुछ पेड़ दूसरे, अभी यहाँ पे क्या है पेड़ स्टार्ट हो गए हैं चेंज होने। यहाँ से आपको जो पहाड़ वाले होते हैं ना, ये चीड़ वाले, चीड़ देवदार के पेड़, वो सब दिखाई देंगे। धीरे धीरे मतलब चेंज हो रहा है। अभी आई थिंक यहाँ पे टेम्परेचर होगा 25 टेम्परेचर होगा, बट जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा क्रॉस करते हुए आगे को जाते रहेंगे तो वहाँ पर आई थिंक 17 टेम्परेचर हमारे बरसात में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि ठंडा एक धुआ मौसम में रहता है और हरियाली बहुत ज़्यादा रहती है। अभी जो है थोड़ा पीक सीजन है और गर्मियाँ हैं, तो इस वजह से थोड़ा जो पहाड़ हैं उन पे जो हरियाली है वो रही नहीं है, वो सूखे हुए से पेड़ हैं और घास सूखी हुई है। बट या टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है और तभी सारे टूरिस्ट अभी यहाँ पर नैनीताल विज़िट करने आते हैं। ये देखो मेरा भाई जा रहा है। Nothing I can do. I can never get to you. So I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. It's how I feel. You deserve better than me. Small point था, अगर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की
आप देख ही रहोगे काफ़ी सारे बैंड आ रहे हैं, तो हॉर्न देते हुए ही जाती हैं गाड़ियाँ, वरना थोड़ा सा रहता है कि एक्सीडेंट वगैरह होने का। दैट्स वाई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर थोड़ा हॉर्न देती है। ब्यूटी है पहाड़ों की, वो आप मतलब शहरों में वो चीज़ आप एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। वहाँ पर डीजे, मस्ती, पार्टी, मंदिर भी है जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप पे, और यहाँ से है नीचे का नज़ारा।
पहुंच गए हैं सड़िया ताल पे। सड़िया ताल से थोड़ा ऊपर हैं और आप मेरी सिस्टर को देख सकते हो। सी इज़ हैविंग हर हेलमेट इन हैंड, though she did not wear it at all entire journey, but and she is very happy because we are having trip together after so long time. And you see the beauty and day is really good. Summer is really shining, sunny, and see the beauty of lake Sadiya Tal. Guys, we are 1 kilometer away from the Nainital. Guys, प्राकृतिक व्यू का आनंद लेते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं ब्यूटीफुल लेक सिटी ऑफ कुमाऊं, नैनीताल। रोड थोड़ी ठीक नहीं है जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है राइडिंग करते हुए। लाइक व्यूज ये हैं जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। This is the lovers point. Also, people want to do horse riding, so you can come over here. This is quite close to Nainital entrance gate. People come over here for horse riding. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. But I can't see them. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down